Hello, my sweet little friends. Today we will do English reading practice. Part 3. In reading practice, we will read a story. Story of a fox and the grapes. डेली रीडिंग प्रैक्टिस से अब आप काफी वर्ड से फेमिलियर हो गए हो, काफी साउंड से भी फेमिलियर हो गए हो. जहां वर्ड या साउंड डिफरेंट होगी मैं आपको गाइड करूंगी, बट आप भी मेरे साथ साथ रीड करो. डेली रीडिंग से आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. सो शैल वी स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट. Once upon a time. Once upon a time. यहां पर हम once रीड करेंगे, once रीड नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनकी वजह से वो रूल्स फॉलो नहीं करते और उनकी साउंड डिफरेंट होती है. ओके, सो ये है वंस अपॉन अ टाइम. देयर वॉज अ फॉक्स. देयर वॉज अ फॉक्स. टीएच की साउंड द. देयर. She was hungry, wandering in the jungle in search of food. She was hungry, wandering in the jungle in search of food. अब यहाँ पर एस एच इकट्ठा है तो उसकी साउंड क्या बन जाएगी? श. श. और सर्च में सी एच इकट्ठा है तो इसकी साउंड क्या बन जाएगी? च. च. सर्च. Suddenly she saw some grapes hanging from a vine. Suddenly she saw some grapes hanging from a vine. Her mouth watered. I want to eat these grapes. I want to eat these grapes. These are so juicy. These are so juicy. I have never seen such juicy grapes. Suddenly, she saw some grapes hanging from a vine. Her mouth watered. I want to eat these grapes. These are so juicy. I have never seen such juicy grapes. She jumped and jumped. She jumped and jumped. But she could not reach so high. But she could not reach so high. After so many tries, after so many tries, she felt tired. She felt tired. She said, "Ah, these grapes are not good and juicy." She said, "Ah, these grapes are not good and juicy. These are sour. These are sour. I should not eat them. I should not
eat them. She got up, ran towards the forest. She got up, ran towards the forest. How was the story? Have you enjoyed? What is the moral of the story? Try hard to achieve the goal. Try hard to achieve the goal. I hope you enjoyed the story. देखा स्टोरी भी रीड की और रीडिंग प्रैक्टिस भी हो गई है ना। तो डेली ऐसे ही रीडिंग प्रैक्टिस करते रहने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को। Tomorrow again I will be back with my new video on reading practice with a new story. Keep watching and learning with me. Goodbye and take care.